प्रजनन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the PS4 will start twice at predesignated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. जो तो जो लाइफ ओ नाइट तो नेरो नारो न सिसा लेट थमनि बक पांदावो लॉन्चिंग खेमो अब टाइम ओ सो के फनुरु मायां था आर फॉर तो बोरो ऑडिटो L1 मिशन तो बुनो तिमियो सालो होई साये तुया हा तो ऑलरेडी मिशन स्टार्ट हा लॉन्च के हा इनका बनि बक पांदावो तो बोरो न नारो नाइट तुंदी तो नारो ना जे फनाय मन जरा फनु नाय तो बोरो ऑलरेडी लॉन्च के पे हा टाइम फॉर 11:50 उंकना 11:15 जियो लॉन्च के हा रॉकेट होई साये हा ताओ रॉकेट बोये तो नारो नाये तोंदे जे फुंगाय मन जरावा ननो लाइफ नो तो खरा रो कामा के देखना के वीडियो रो साइ साइ के नो सिसा कमेंट्स रो खेलाई दे नारो नाइदे सिसा कमेंट्स रो खेलाई दे बकेचने इंडिया ने इसरो टीम रो से इसरो वो सामुंतानाय जेने साइंटिस्ट मथोराव साइंटिस्ट दल रौसे बा चुक्तने रखे तो ब्राव जान जानि सामुंग बिजि पे दङ तो ब्राव हुइसालाय पे दङ जान जानि +9 minutes. Speaking a few words about एसेंब्लियां Aditya खाचामो L1, खरं कामाके खनावा describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakash Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya बके ऑडिटो L1 मिशन से नारो नाइनुकना ब स्क्रीन नो This नारो mighty नाइनुक jewel, दंखना the light of eastern sky, who generates, operates, and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered अजय कुमार रियांग ब ऑडिटो L1 मिशन बके सालो हुइ साये तिंगाम से ताओ चिने पोटिम बिनचियो ताल सॉरी सालो हुइ साये तिंगाओ सालो बोमा मिशन सक्सेस हो हासिंके चिनी इंडिया नि साको ट्रे बोचो बा खानुं माइमो बा प्राउड माइमो नाय Now we have a successful separation event of the third stage of PSLV. It is approximately 900 seconds. +10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। PSLV C57 रॉकेट नि मुंखे मिशन नि मुंखे बो ऑडिटो L1 मिशन बोरोनारो स्क्रीन पर नाइनु दंखना लाइव वीडियो नो फो सिसा वाइसो शेयर खलाई दे नारो खेमै मे हासंके शेयर खलाई दे 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. Young Bru Boys, Tinio who is having a live say Narona Taufnu to more live Tower who is hiring a time for 11:15 rocket, who is higher rocket launch Keha, get our Bointongo, Bonya Bini, part Kehale Kaupuno Kali, Painankna, Tower, Naro live for night on the कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। एनके ब्रू चोरखी सालोले सुमैनि देउनो सालो सो दे सुमैनो सुमैया बोले तावन जराले सामैया को बुं सालो सुनि बे थे समय नांथानाय जेपो नुखा तालथाम तालब्रै रोपन नांथामायो खाबनि बो पान्दाव जे बुं सुपाइफो से सो दे सुमैया बोले चुंसिलाय 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित
किया है। जेफो चिनी साइंटिस्ट रो चिनी सिंक्रों रो ब्रो आसायो हुई मोले सुमय अंगनै मानि बक पांदा नो आसाले हुयो बोसारफो ब्रे उनत मांगनो आबुले चों सामाया साकातोने हानि चोंमोसे सालो सो देसो मैना सुमया बोले नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी नाइनो तोखना नारो उमसा बीजी के बोरो नाइ सापे तो चिनी सिंक्रों रो बो चिनी साइंटिस्ट रो चिनी इंडिया ने L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। Vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. तो बोरो रॉकेट बुइसाये तो नारो नाइनो तोखना बो ग्राफ नि दियो बोरो फना मोरो बोरो नारो नाइनो तो The माइखना distance between the earth and sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange's point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the नारो gravity नाइनो of तोखना Earth बो and Sun. ग्राफ सिंयो It बोस ते requires आके little हर चुंबक energy चुंबक for चुंबक केन stationary तोमोके beam. बो माके चिनी Several आदित्य probes are L1 being मिशन placed in बुंता वो space to बुक्ति observe जागो the थांगे sun सु तोहा बो by जागा various वो space निसे agencies. अबो जागा वो निसे तो अबो बुं सिग्नल फनु तो Lagrange's point अबो नारो L1 is चुंबक a चुंबक great के नाइनो location तोखना for बो solar ग्राफ सिंयो explorers such as बो नारो नाइनो Aditya तोखना L1, as it बोके allows तो for बो an चिनी आदित्य unobstructed L1 view of मिशन the sun बुंथांग that is तोमोसे never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. बो मिशन से सक्सेस होहा सिंखे चिनी इंडिया निसाकाओ बारी की त्रेबो चों रेस्पेक्ट माने त्रेबो ब्रोम माने चिनी हा निसाकाओ खाबुनि बो 15 नौले ब्रेकी चों नारो जे नाई तोने रोको नो पोसिसा कमेंट्स दुइके सिरिदे लाइव चैट खलाइदे चिनी बो आदित्य L1 मिशन बुंबा सालो थां सुमैनि दे सुमैया दे नौले ब्रेकी आसा नो निम खावले माये चों नारो आबो रोफनो सिरि लाइदे जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। बोरोनारो सामुक नाकना 125 days साल रिजाहा के खोलफेबा रिजाहा साल रिजाहा साल खोलफेबा नांनाय बुं सालो थांनि सोबनायमा आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास बोनारो है नाइनो और तुमना तो बुं ऐसा बुंसानो ये point तो है बचनी ऐसा आदित्य point है L1 जहां से रॉकेट सूर्य से को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी।
वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। SM riang kau buino nung samo khaksa nini comments bono chungjo to mkhawa saye tongo jefo chini bo Aditya L1 bung kaham kam ke salo thange sukmai tho success sukmai tho bono joto chini asamo chini mkhawo nro nai tonero sisa bo life no share kheme asengke hamnai share opo khelai krudi sisa Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph, VELC, which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX. Doniram bru isor sin India no nangko ke oke bono jotoni asamo jepo saka tone asesiu so de so maino so maya ang chungmi bono chini tawo bo success o me asenke purthi bimanawo chini India no record no mai ni male tawo no jorale onge tongo kabuni bo pandawo jepo saka tone ha kaham kam ke suri me asenke chini India ni sakawo trebo bembai brom riok mo bembai naye ba khanung mai mo jakhiye samung tawo chini ISRO thoro tangi tongo chini scientist ro armi bo bro ni samung ba bo chini samung success wa singke chungjo to ni sakawo barike kha kaye chungma tungnai Payload is high energy L1 orbiting X-ray spectrometer or HELIOS developed by URSC. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ William Gaming FF chini India debo ba chini India no chini Indian chino tobo hui saye tunya o Satish Dhawan Space Center Andhra Pradesh ni chingo ke hui saye tunya o salo hui saye tunya o salo thange so nai 125 days nangnai bachini Aditya L1 mission 125 days ni msingo bung thangi so inai salo aro so paimo ni yago se chung bung success umai nei de umai ya de abuno chung kaham kiye nuk mai nai success umai pho umai ya pho abuno chung nuk nai train ukha tal nei tal tham lai paimo ni yago tinio se bo tini 2nd September 2023 tini bo September tal ni ukha sal nei ma boro se buno hui saye tinya o The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार है और nro nainu tungna borowo joto chini singkrung ro bro rangma hui khaima yakhiye borowo busy khong paye tongo slak la yakhe janjanim khawa chung paye tongo bro saka tone han thio wain suma sain pai tongna jefo kaham kaham ke suma iman bo pandawo इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन bo bung sa thangso inai 125 days ni msingo bung salo thangso nai bonaro nainu tungna chini bo Aditya L1 mission rocket to bo bung thangi tongo nong yaw go nang tre extra ke videos namye launch mo video launch ke mo video abo phone live no video tu sai clip no nai एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्स-रे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा इसमें William Gaming FF ma ata ta wo Chandrayaan 3 hui sa pai phie tini uchi ha salo rocket hui sa phiom deklai William Gaming FF Chandrayaan 3 hui sa paye tini yoke bo 2nd September tini yoke bo Aditya L1 mission bono launch ke okha bo bono ke salo hui sa yomi salo bongke thangye so yenai salo ni bo pandao bo rocket mission ke hui sa yom se Chandrayaan 3 juda ake bo bung juda se
Chandran tri ke bungke talo se thango taubo buno ke salo se hui saye tingya o. की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है. Bruboi launch ke yau hade phi launch ke om no to no live nu tongo tinio no launch ke o time for 11:50 yo buno launch ke ha puro putin bin chin indian che buno hui saya ha inke tao ke bong salo ni bok pandao ke ye bong lama wo ungi tongo chini Aditya L1 mission rocket kenaro nainu tongna borowo bukti jara soha ma soha boropa hanaro screen no nainu tongna Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य. Yang Bru Boys okay update tongnai boni bini step by step pa hani update tongnai je bongso ya hani so pai fo bong ma so ongpi so plong dong pi mai ong pi mai ya thangi so de so me ha so me ya abor ono phone na phone ye tongnai update ri tongnai kabon ba pandon naro channel no je subscribe ke khoro phone naro subscribe ke tingai di te bode video kaham kaham no so mi ni ba pandawo William Gaming FF Khaksangha Atanu ano reply kimo okay most welcome William Gaming एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है. सोलेक्स और इलियोस दोनों ही यूआर सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं. ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं. और अंत में मैग्नेटोमीटर लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है. यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है. आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में. As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India has made history with the Chandrayaan 3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hat. Range operation In director. fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project Ramanando a grand nung success. lebron ni And chimanya I'm ta Srinidhi, saradi reaching out to you Mr. from Ramanando SSC nung Lab nancha Space singke Center, bo chini ISRO ni ke official Sriharikota. channel tongo ISRO hi Today we'll suye be nung search discussing kemene about tawaro live the ongi tongo impact live and the update ongi benefits tongo of the abono no taw no Aditya no pho L1 phnu ye space tongo mission. ISRO So channel today naro we haye are nai minai joined by YouTube Dr. ISRO Anil in sui search kedi Saraswat, Director of PRL, Dr. Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya L1 mission, Dr. Durgesh Tripati, PI of SCYT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya L1 launch. To start with the principal scientist and PI of SOLEX, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya L1 mission so important and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. First of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. And sun is our own star, our dearmost star. So understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Sri Kumar and Professor G. Srinivasan,
we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India, and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and Ke no joto some je na ye data tong nai which are no no very joto important khak for chango the ke Earth BN blogging atmospheric atani param to yo ki connections ang like sa wain so near no bai ultraviolet ke band sagrari and BN the high blogging energy personal particles details sim is choke high personal energy krum radiations phaide body life as well as ro sung ya particles man is ke coming ye from the solar flares and coronal mass ta ejections. salo su So nai these are the male msa informations ding nang which nai would be thi available from this Mr. particular William mission, Gaming which will FF allow us Bob to Aditya L1 mission understand the bung sun, salo thang its so na dynamics, asing ke as well as nokha the inner sal hemisphere, rijaha which kholphe is ba an nang nai important element for the 125 days current day basu sal technology nang nai as well as the space nokha tal development. tham tal brui phono Thank you romai so ha much nokha for tal your brui talk, sir. 90 So now we move on nokha to tal Dr. brui Anil sisa thau ya Bharadwaj. nang nai So the basu sun hun is im a singa very bung thang ye so important inai energy source of 125 light. days nim singo Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does Aditya L1 helps us through the mission? Ketini ni life le boron jorao no tawo bo Aditya L1 mission First of bung all, let me thang tell saye you tongo that ke bini Aditya update no L1 chungya is a go nai le phina multi-wavelength, tre sal rawo multi-instrument, mami ke bung salo so nai multi-directional bari soming mission. bang mang ye tongko no kha tal Multi-wavelength brui ni because it kause works in tini kha yo X-rays, so ni mani kau ya and kaboni visible. bo pando chung klu klu nai le nai tre Multi-instrument fo because there are ke 7 naro je experiments on board, life o na ye and tonai ro no multi-directional naro because phaye it krung phai mon looks bo not pando no only jo tono khak in the chang sun ha direction but inke also boni around update no it. to ye naro naim cha Now, singke when no the na sun ya go becomes video angry, kahama ke snami ri nai there are tausa two types of details ke process ye which happens. tawo One bo is life solar ni khoye no flares, na that nang is video upload electromagnetic kheri nai radiation, which reaches the earth in 8 Gaboje minutes. Aditya L1 mission But bung along laun with sumo that, there is abono a phono no na mass ang which is also video ejected out de in kaya the video plasma, tre gas nami no na and abo that laun can sumo take about update 2 to 4 video days to clip ro produce. phono no no tui safe no nai What we are kaboni bo looking pando for naro channel from bai the krung Aditya phai L1 tonde mission ke is tawoni to jorale chung see borono kathau grana the no joto impact life on of na ye solar tone no flares khasangye as well as ake no coronal joto mass no sal kaham ejections ya phai as they ye come through. borono video pai reha We have instruments which look at not only in the sun direction